student, so today we will see the topic that is the basic logic gates, right? So this is very basic topics for the digital electronics. This is the basic building block of digital electronics, right? So what is basic logic gate? What are the types of logic gates? How to remember the truth table? Yes, that everything we are going to see in that particular video, right? A logic gate is a basic building block of the digital circuit, right? It is an electronic circuit that has one or more than one input and only the one output, right? The relationship between input and output is based on the certain value. So this is what the basic logic gates. Now, what are the different types of logic gates? So basically, the logic gates are divided into the three types, main type, that is basic logic gates, universal logic gates, and other logic gates, or it is also called as a special purpose gate, right? So basic logic gates के कितने types है? तीन types है. AND gate, yes, AND gate, NOT gate, and this is what OR gate. You might have learned this topic in the 12th science also, right? Universal gate कौन से है? NAND gate and NOR gate, right? And special type of gate कौन से है? Yes, XOR gate and XNOR. Okay, so how to remember the truth table of all these gates? Why it is called as a universal gate? Everything I'm going to explain in this particular video. So we will see one by one. Okay, so we will see the first, the basic logic gates. Okay, with truth table. Now, what is the first logic gate? Basic logic gate, AND gate. तो अभी स्टूडेंट AND गेट मतलब क्या होता है? AND गेट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन. AND गेट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, राइट? मतलब आप जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हो वैसे ही, लेकिन डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू से करना. सो दिस इज द सिंबल ऑफ योर द AND, right? How many inputs are there? Two inputs are there. One input is A and another input is B. And how many output? One, right? So what is the Boolean expression for this? A into B. तो मैंने बोला था आपको AND गेट मतलब एक ही वर्ड याद में रखना है, मल्टीप्लिकेशन, राइट? सो इसीलिए यहाँ पे इनटू लिखा है. ओके, नाउ हाउ टू रिमेंबर द ट्रूथ टेबल? नो नीड टू रट्टा, नो नीड टू मग अप. ओनली यू हैव टू रिमेंबर द वर्ड दैट इज AND गेट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन. सो हाउ टू राइट अ ट्रूथ टेबल? नाउ देखो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे A and B आर द इनपुट्स, राइट? दोनों इनपुट्स है, ये वाले दो इनपुट्स है. इफ देयर आर टू इनपुट्स, हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस विल बी देयर? 0 0 0 1 0 एंड 1 1. ओके, तो हमें क्या करना है? y इज इक्वल्स टू a इंटू b. तो 0 इंटू 0 क्या आएगा? 0 इंटू 0 क्या आएगा? यस, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 into 0 0, and 1 into 1 is 1. Okay, so this is what you were the truth table of your the AND gate. Now what about OR gate? ओके, देखो OR गेट का सिंबल कुछ इस तरीके से है, राइट? तो दिस इज सिंबल ऑफ OR गेट. तो OR गेट मतलब क्या है? OR गेट मतलब क्या है? एडिशन. OR गेट मतलब क्या करना है आपको? एडिशन करना है, राइट? तो एडिशन करना है मतलब क्या? क्या हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर? हाउ मेनी इनपुट्स वी हैव? दैट इज A and B, right? A and B. A plus B is my the Boolean expression. Now the inputs are same over here. Yes, the inputs are same. That is 0 0 0 1 1 0 and 1. Now प्लस करना है, तो 0 प्लस 0 क्या होता है? 0. 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, एंड 1 प्लस 1 इज 1 लिखा है. नॉर्मल मैथमेटिक्स में 1 प्लस 1 क्या होता है? 2 होता है, राइट? 1 प्लस 1 क्या होता है? 2 होता है. लेकिन 1 प्लस 1 यहाँ पे क्या होता है? डिजिटल एडिशन, बाइनरी एडिशन में क्या होता है? 1 plus 1 is 0 and carry is generated 1. Carry is 1. So that this carry I have written 1. So that 1 plus 1 is 1. And NOT gate. How many inputs are there in the NOT gate? Only the one input. A. और NOT gate में कैसे होता है? उल्टा होता है. ट्रू दिया तो false, false दिया तो true, 0 दिया तो 1, 1 दिया तो 0. Okay. What is the expression? A bar. ऐसे लिखते हैं. Okay. If there are two inputs, how many possible combination? Either 0 or 1. और आउटपुट कैसे होगा? 0 दिया तो 1 आएगा, एंड 1 दिया तो क्या आएगा स्टूडेंट? 0 आएगा. Okay, so this is what the three types of basic gates. These are the symbol and these are the truth table you need to remember. I repeat again, if you want to remember the truth table of AND gate, you need to remember the multiplication. AND gate में OR gate में addition और यहाँ पे उल्टा. Okay. Yes. So next type of gate, that is what the universal gate. Basic gates तो हमने देखा, अभी universal gate देखें. अभी देखो ये universal का मीनिंग क्या है? यूनिवर्सल गेट
का मीनिंग क्या है? मतलब any kind of gate, any kind of Boolean expression you can implement with the help of these two gates. So universal gate कौन कौन से है? NAND gate and NOR gates are universal gate. Question may be like that, what is universal gate? Why it is called as universal gate? So what is the answer? Any kind of Boolean expression, Boolean function or gate you can design with the help of NAND or okay. So this is what, so that it is called as a universal gate. Okay. So NAND and NOR. Okay. So we will see this gate along with truth table over here, right? Now, what is NAND gate? देखो ये word देखो, NAND is what? Not of and, student. That is what? Not of and. तो देखो AND गेट का ही सिंबल निकाला है यहाँ पे, as it is निकाला है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या दिया है? बबल दिया है, बिकॉज ऑफ दिस एन, दैट इज नॉट ओके। एंड देखो यहाँ पे भी NAND में क्या है? A इंटू बी है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? कॉम्प्लीमेंट दिया है, बिकॉज ऑफ दिस NAND, राइट? एंड व्हाट इज द ट्रुथ टेबल? हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर? हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर? Two inputs are there, right? How many inputs are there? Two inputs, A and B. So how many possible combinations are there? That is 0 0 0 1 1 0 and 1। लेकिन यहाँ पे देखो ट्रूथ टेबल कैसे होता है? जीरो, अभी देखो इक्वेशन मेरा क्या है स्टूडेंट, ये कॉन्सेंट्रेट करो, A इंटू बी और उसका कॉम्प्लीमेंट लेना, कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा करना है जो कुछ भी आंसर आता है। ओके, 0 इंटू 0 क्या आएगा? व्हाट इज 0 इंटू 0? दैट इज 0। यस और 0 इंटू 0 0, एंड 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा ये लाइन की वजह से? यस और नो? 0 इंटू 1 अगेन 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1, 1 इंटू 0 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1। यहाँ पे देखो 1 इंटू 1 क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, लेकिन 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 0, इसलिए यहाँ पे 0। गॉट इट? सो दिस इज व्हाट यू द and the thing is that the output is low only if all the inputs are high. Okay. Now what about this what about this NOR gate? What about this NOR gate? This is similar to that of OR gate, only the bubble is added because of this n, that is not of 4। okay, and what is the symbol? What is the Boolean expression? A plus b to OR का है, और ये line, this is the equation for you the NOR gate। अगेन द सेम इनपुट 0 0 0 1 1 0 एंड 1। तो देखो 0 प्लस 0 क्या आता है? 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1, 0 प्लस 1 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0, 1 प्लस 0 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0, 1 प्लस 1 is 1 and उसका कॉम्प्लीमेंट is 0। So this is what you are the universal gate के truth table, and this is the symbol of this universal gate, right? Now the next is what? The special purpose gate is also called as a special type of gate or derived gate। okay, तो दो गेट है, XOR gate and XNOR gate। okay, तो ये एक सिंबल कुछ इस तरीके से, देयर आर टू इनपुट्स वन आउटपुट, एंड व्हाट इज द इक्वेशन? A XOR B, ये XOR लिखने का ये सिंबल, राइट? नाउ हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर? अगेन 2, 0 0 0 1 1 0 and 1। लेकिन ये कैसे दिमाग में रखना? आई विल टेल यू वन लाइन। if both the inputs are same if both the inputs are same then your output is 0। देखो यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे 1 1 है, आपका आउटपुट क्या आ रहा है? 0। or else if the both the inputs are different your output is 1, right? and what about XNOR gate? it is उल्टा of XOR gate। देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? सेम सिंबल निकाला है, यहाँ पे क्या है? खाली बबल निकाला मैंने, राइट? yes, inputs are same 0 0 0 1 1 0 and 1 1, लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखना है। if you compare this, if both the inputs are same, that is 0 0 and 1 1, लिखो तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? 1, and if the inputs are different your output is 0। and what is the Boolean expression? A XOR B, और उसके ऊपर n लाइन में लगाना है, because A, this is A XNOR, n for now। got it? So this is all about the three types of basic gates, universal gate, why it is called as universal gate, and these are the special type of gate। many times the questions on this topic। okay, so don't ratta, don't by heart this XOR gate, you need to remember the truth table with the help of the said। okay, thank you so much for watching। if you have any doubt you can ask me in the comment section। thank you।